Welcome to Live One channel. Today I receive 840 G3 in no display problem. When I connect the power cable, it's turning on. The power button light glow, but no display on screen. Also no dim display here. Nothing appear. And when I tab caps lock, the LED glow means motherboard is working, but no displaying on this LED. First remove battery. It's a very common fault in 840 G3 laptops. Today I show you how we can repair this kind of fault. In this particular motherboard, this IC become weak day by day. We need to replace this U3000 IC. Remember, it's not a backlight LED IC. It's a LVDS VCC IC, which is 3.3 volt. If you don't have this IC, you can jumper it. You can see the light is glowing. As you can see, laptop is working perfectly. Now in हिंदी, मेरे पास ये HP का लैपटॉप आया था. इसमें पावर ऑन होती थी इसकी और कैप्स लॉक की लाइट भी ग्लो करती थी. उसका मतलब होता है कि ये जो मदरबोर्ड है वो डिस्प्ले दे रहा है, लेकिन LED पे डिस्प्ले नहीं आ रहा. ऐसा नहीं था कि इसमें बैकलाइट का इशू था. इसमें डिम डिस्प्ले भी नहीं था. अगर डिम डिस्प्ले होता तो हमें LCD पे नज़र आ जाता लोगो वगैरह कुछ चीज़. इसमें LCD के जो वोल्टेज होते हैं पावर के 3.3 वोल्ट VCC, वो इसके 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे थे LCD के. इसलिए ना लाइट आ रही थी और ना ही उस पर मतलब कि LED में कोई चीज़ नहीं आ रही थी. LED बिल्कुल ब्लैंक थी.
और अगर एलसीडी में पावर की वोल्टेज ना हो 3.3 वोल्ट तो इसकी बैकलाइट भी ऑन नहीं होती। तो ये नॉर्मल फॉल्ट है इसका इस वाले लैपटॉप में, तो अक्सर मैं ये रिपेयर करता हूँ। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसा है, ये मैग्नीफायर ग्लास से कि मैंने कहाँ पे है इसका जंपर लगाया है। ये देखें, इस पे मैंने ये जंपर लगाया है, इसमें अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अभी ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने जंपर लगाया, बाद में मैं इसका ना वो चेंज कर दूंगा, आईसी दूसरा आईसी लगा दूंगा इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।